Even I am speaking, sp hybridization means how many orbitals are involved? Ma'am, 2. 2. Ma'am, 2. 1s and 2. And how many sigma bonds will be formed? Ma'am, 3. How many sigma bonds? Ma'am, 3. एक S और एक P है. Ma'am, 2. 2 sigma bonds will be formed. ठीक है? So it means example of sp hybridization is BeCl2. Beryllium chloride. It is having sp hybridization because there are 2 sigma bonds. BCH3 या BCl3. It is having sp3 means the shape is triangular. So there are 3 sigma bonds formed. sp3 means methane. Is it okay? Now my next question is how many, we are continuing with the hybridization. How many sigma and pi bonds are present in? Always keep in, बाद में मत बोलना मैम हमें नहीं मालूम. Always keep in mind कि all the single bonds are sigma. ठीक है? लेकिन अगर कहीं पर एक दो एग्जांपल्स मैं ले रही हूँ, I am taking 1 or 2 examples. If I am taking is C2H2. C2H2 means C triple bond C H H. Okay. Now the first single bond, it is sigma bond. It is sigma bond. अब ये कौन से? Which is this bond? Triple bond. All of you know that this bond is triple bond. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. होते हैं सिग्मा और बाकी 2 बॉन्ड्स होते हैं पाई. ट्रिपल बॉन्ड में फर्स्ट बॉन्ड होगा सिग्मा एंड अदर 2 बॉन्ड्स है पाई. सो हाउ मेनी टोटल सिग्मा बॉन्ड्स? आकांक्षा 3. Ma'am, 2. एक आकांक्षा 3. Ma'am, 3 sigma, 2 pi. आकांक्षा ओनली. ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा. आकांक्षा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? 3. एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? 2. Okay. Now next part, who has to answer? Aishwarya. If I am taking is benzene. Benzene is C6H6. Yeah, easy example ले लेते चलो. C2H4 I am taking. C2H4 means C double bond C H. This is C2H4. Yes. How many sigma bonds, Aishwarya? Akshita, how many pi bonds? Ma'am, 3 sigma bonds. कैसे बताओ? मैम एक हाइड्रोजन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड और है? एक ये मैम कौन सा सिग्मा. बॉन्ड? सिग्मा. ये वाला, ये वाला. सिग्मा. सारे बॉन्ड सिग्मा है ना? ये वाला यस मैम. सिग्मा. सिग्मा. ये वाला पीछे वाला एक सिग्मा होगा और एक पाई. फर्स्ट Yes, is ma'am. there is pi. So how many sigma bonds? 5. And how many pi bonds? 1. 1. Is there anyone in the class to whom this concept is not clear? बाद में मत बोलना कि मैम नहीं आता. Any doubt you can ask right now. मैम पाई बॉन्ड के लिए मैम डबल या ट्रिपल जब होता है तो पहला वाला उसमें हम सिग्मा ही होता है, बाकी के जो बचते हैं वो पाई हो जाते हैं ना. बाकी सारे pi. ओके. ठीक है? Okay. Now next example. It will be answered by मैम Aryan and Ayush. Yes. मैम पाई बॉन्ड की प्रेजेंटेशन हमेशा एक अलग हाफ होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और हाफ होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे. तो हम उसे 2 क्यों नहीं मानते? तो एक ही बॉन्ड बनते हैं, ऊपर से भी ज्वाइन होते हैं नीचे से भी. That is considered only as one bond. ओके मैम. Okay. Okay. Third example is I am taking is benzene C6H6. Benzene, if you are not knowing the structure, just remember this, all these are carbon atoms. There are 6 carbon atoms. Each carbon is joined to a hydrogen atom. Okay. And between alternate carbon atoms, यहाँ पर एक double, single, double, single, double. Yes. Now
Aishwarya, how many sigma bonds? Akshita, how many pi bonds? Yes, Aishwarya. Yeah, Akshita, you can tell first. Akshita, Ma'am. are you count? Yes, ma'am. How many pi bonds? Ma'am, pi Ma'am, bonds are 2. Pardon? मैम 6 तो कार्बन हाइड्रोजन के हैं pi वो तो bonds sigma वो bond अच्छा है। हाँ सॉरी Bonds हो गए, all these are sigma bonds. Yes, ma'am. मैम 3 pi bonds Bonds free है कैसे? ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं इसमें फर्स्ट सिग्मा हो गए, ये पाई और ये पाई। ओके ऐश्वर्या, 6 हो गए कार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन Ma'am, कार्बन plus carbon 6 के. प्लस 6 12 हो गए। ये भी देखो, ये डबल का मतलब सिग्मा 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 सिग्मा। So total Yes, there are 12 sigma bonds and 3 pi bonds. Okay, next case. अच्छा, ये ध्यान रखने की कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. Now the question may be given in this way also. If I am giving you CH3, CH2, CH3, how many sigma bonds? Yes, Bhavya Bhardwaj. 1 2 3 यस 4 मैम यानी इसमें बेटा मैंने इसको सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया है, बट अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो कार्बन और CH3 का मतलब इट इज कंबाइंड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स. may I? नहीं, पहले भव्य भारद्वाज ट्राई करेंगी, देन यू कैन टेल. यस मैम ओपन स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन देयर विल बी अ सिग्मा बॉन्ड. यस मैम टेल मी हाउ मेनी हाइड्रोजन? मैम 3 2 3 टोटल हाइड्रोजन मैम इट्स 8 तो 8 आपके हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इफ आई एम ओपनिंग इट आई कैन ओपन इट लाइक दिस. लेकिन अगर मैं इसे आपको विदाउट ओपन भी यू शुड बी नोइंग कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स. ओके, तो 8 बॉन्ड्स तो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्लस एनी अदर सिग्मा बॉन्ड. यस मैम 2 सिग्मा Ma'am, बॉन्ड carbon. कार्बन Carbon carbon sigma bond. The total sigma bonds are 10. Any doubt? You can open it. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And there is no pi bond. Okay. Next is Bhavya Mishra. If I am taking this example, CH3, okay, let me open the structure. C double bond OOH. How many sigma bonds and how many pi bonds? Bhavya Mishra. Ma'am, 7 sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. And how many pi? 1. 1. Very good. Bhavya, आपकी जो नंबर इतनी अच्छी है ना? मैम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई थी, बस 2-3 कैलकुलेशन, मतलब आंसर सही आ रहा था लास्ट में, बस कैलकुलेशन में एरर हो गया था. 0 मार्क्स हो गए ना, देखो कितनी जल्दी. And I was surprised. कुछ बच्चों ने मेरे को really surprise किया, like RN Sinha and you, Vanshika also. Vanshika is there? No. Okay. Ma'am, for C2H2. So I hope now it's clear to you how many sigma and pi bonds. Ma'am, अच्छा, C2H2. क्या चीज? Ma'am, C2H2 बता दो एक बार. C2H2. C2H2 means there are 2 carbon atoms and there are 2 hydrogen atoms. Now each of the carbon is tetravalented for 4 bonds. So 1 यहाँ पे हो गया, 3, 4, 5. अब all the single bonds, carbon hydrogen bonds and sigma bonds. अब ये कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है. Whenever we have got triple bond, first bond होते हैं sigma, बाकी 2 bonds होते हैं pi. So total sigma are 2 plus 1, that is 3 sigma bond
and pi bond is 2. Okay, last question. How many sigma and pi bonds are present here? Just remember, carbon hydrogen bonds are sigma. Yes, Dishita. Ma'am, what have you written? CH. CH3. It is CH3. Dishita, पहले मेरे को बताओ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? मैम 8 8, ठीक है ना? 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर 8 प्लस. अब बताओ और कौन से बॉन्ड सिग्मा? कार्बन कार्बन बॉन्ड देखो, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? दिस बॉन्ड इज सिग्मा. ट्रिपल बॉन्ड में भी फर्स्ट होगा सिग्मा. हाउ मोर? मैम 4 4. तो 8 प्लस 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12. तो आपको हर बार स्ट्रक्चर ओपन करने की जरूरत नहीं है. You can simply count that there are 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbon, 8 hydrogen, and carbon hydrogen bonds are always sigma. Dishita, how many pi bonds? मैम 2 2. Okay. So I hope this concept is clear to you. So now you have to keep in mind, while we are doing the hybridization, बेटे इसको आपको पढ़ नहीं रहे हो बार-बार बोलने के बाद भी, और आपको बिल्कुल भूल नहीं आएगी बाद में. You have to keep in mind while doing the hybridization that the pi bonds are not formed by hybrid orbitals. It means hybrid orbitals, they do not form pi bonds. Only sigma bonds are formed by hybrid orbitals. Is it okay? Sigma bonds as well as lone pair of electrons. If I am taking the lone pair of electrons, they also are formed by hybrid orbitals. Even fully filled orbitals can also take part in hybridization. Okay, now I am drawing a simple example. Now you have to tell me the hybridization of Pcl3. First, one marker question, MCQ. Options are sp3, sp2, sp, sp3d. One marker question. Now, how many? Now, in these type, you don't have to go in details. How many valence electrons in phosphorus? 5. 5 valence electrons. Okay. A मैम configuration. आंसर SP3. Yes. Someone मैम must. आंसर SP3. मैम 8 5 valence electrons, please. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Okay. So this is my valence shell. So in the my valence shell, this is 3s and this is 3p. Is it okay? Now, after this chlorine is 2, 8, and 7. Chlorine needs how many electrons? 1 1. Is required. अच्छा, phosphorus chlorine bond क्या होंगे? अच्छा, phosphorus और chlorine में कौन सा bond बनेगा? Single और double? Single. Single. तो it means यहाँ पर 3 तो है phosphorus chlorine single bonds. अच्छा, क्या hybridization s orbital के बिना होती है? Does hybridization takes place without s orbitals? No, ma'am. No, ma'am. No. S orbital is must. तो एक s का होगा, 3 unpaired electrons होंगे, तो each of the chlorine will share one electron each. Each of the chlorine will share 1 electron, and there will be one lone pair left. So what is the hybridization? sp3. Is the point clear? yes ma'am
ठीक है, s ऑर्बिटल के बिना नहीं होगी, बेटर है बैलेंस शेल ड्रॉ कर लो 3s एंड 3p, ईच ऑफ द क्लोरीन विल नीड 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक क्लोरीन इसके साथ आ गया, एक इसके साथ आ गया, एक इसके साथ आ गया, तो एक s ऑर्बिटल, एक s हो गया और 3p मींस sp3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आई विल बी आस्किंग अ पर्टिकुलर स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की होती है एल्यूमिनियम इन AlCl3। Hybridization of aluminium in AlCl3. Okay, now galaxy. First, tell me galaxy about aluminium. हम atomic number. Atomic number. Okay. गैलेक्सी भूल गया 9th-10th का एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर, यस गैलेक्सी। ओके गौतम कक्कर, हम 13 मींस कॉन्फ़िगरेशन, मैम 283 8 means 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2 and 3p1. 3p1. Okay, now galaxy, you only tell me galaxy or Gautam. Aluminium, how many bonds it will be forming with chlorine in AlCl3? How many bonds aluminium will be forming with chlorine? मैम 1 कितने क्लोरीन है? AlCl3 में how many chlorine are there? हम 3 तो how many bonds will be formed? जैसे PCl3 में 3 सिग्मा बने और एक लोन पेयर था. Now in Ma'am, this case, how many bonds will be formed? मैम 1 each. Total One 3 each. bonds. Any Total lone 3. pair will be there? Okay, any lone pair will be there? हम P एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हम 2 lone pair. कैसे? एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 and 3. तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0 मैम, सॉरी मैम 2 हम वो नहीं होगा हम, क्योंकि 0 है वो है। मैंने यही बोला कि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना? हम यस इलेक्ट्रॉन, और हर इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अच्छा, कि 3 बॉन्ड्स बने, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो व्हाट विल बी द शेप या ज्योमेट्री? व्हाट? हाँ जी, व्हाट विल बी द शेप और ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। 3 में टेट्राहेड्रल कहाँ से होता है? ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। बेटा आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, मैं इतनी मेहनत करके पढ़ा रही हूँ एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, यू आर रिस्पॉन्डिंग, यू आर स्टडीइंग केमिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। आज मैं एक्सक्यूज दे रही हूँ, कल सब बच्चे पढ़ेंगे और गैलेक्सी मुझे पर्सनल पे मैसेज करोगे कि मैम आई हैव रिवाइज कौन कौन सा टॉपिक, मैं आई एम नोटिंग इट डाउन, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। One is Galaxy, other is Arav Grewal. Are you there? Arav Grewal, are you there? मैं absent लगा रही हूँ। Yes, ma'am. Okay.
कल आज मेरे को पर्सनल पे 9 o'clock तक मैसेज आ जाना चाहिए हाउ मच टॉपिक यू हैव रिवाइज्ड इन फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली. ओके मैम. अभी और भी स्टूडेंट्स लिख लेंगे. ओके, सो आरव शर्मा आल्सो. Okay, so what I am saying is that it is 3 valence electrons, so it is forming 3 bonds. So in the what happens in the excited state? इसके पास तो कितने unpaired electron है? 3s2 3p1. How many unpaired electron it is having? Himanshu, how many unpaired electrons aluminum is having? मैम 3. 3 कैसे? मैम 3. If I 3 तो electrons. Unpaired तो 1 है ना? मैम s ऑर्बिटल से p में जाना पड़ेगा. हाँ, तो excited state हो गई. एक्साइटेड स्टेट में चला. What is the hybridization now? My question was मैम sp2 sp2. S orbital to for plane as there are 3 unpaired electrons, one in S and other in p sp2. There is no lone pair. Here there is no lone pair. Now see in your coaching centers sometimes they tell you about the formulas. और स्टूडेंट को formulas भी clear नहीं होते हैं. So if you are doing this simple way, you can do easily hybridization questions. Is it okay? Now I am giving you a structure and you have to tell me the hybridization again. If I am taking is SiCl4, SiH4, Jayant, silicon, tell me. Jayant, electronic configuration Yes, of silicon. ma'am. Electronic It configuration. is 284, so ma'am, 4 electrons are there in the valence shell. Okay, Ma'am, one it is means ma'am 3s2 and 3s2 and 3p4, 3p2. okay. Now what happens? This is 3s and this is Yes. 3p. How many sigma bonds it will be forming? Silicon Ma'am, minus at- silicon. Yes, ma'am. Ma'am, at first, ma'am, it will form, ma'am. Ma'am, first it'll go in the excited state because, ma'am, we are having 4 valence electrons here. Like, we need to form 4 sigma bonds. That's why it will go in the excited state. और अब 4 बन जाएंगे हम sigma bonds. Very good, Jayant. I am very happy with your response. Clap for you, Jayant. Yes, Really well done. लेकिन मेरी नजर नहीं लगनी चाहिए. एक दो बार हुआ है, एक आध मैं बच्चे की तारीफ कर देती हूँ और वो बाद में आंसर करना बंद कर देता है. It should not नहीं be मैम that. आंसर तो करते हैं. You are doing very well. Okay, so it is sp3. Between silicon and hydrogen, there are 4 sigma bonds are formed, and sigma bonds always take part in the hybridization. So hybridization is sp3. Is it okay? So this is a very shortcut method. अब ये देख लो बस सिलिकॉन और हाइड्रोजन है तो 4 सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए. देन सी इट्स कॉन्फिगरेशन. आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है 2 8 and 4 और इसने 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर दी तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स. So obviously there is no lone pair. There is no lone pair. So this hybridization is of this. अच्छा एक और क्वेश्चन ही आपका कहीं S ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट में आएगा. If I am taking is Al Cl4 minus. Now what does it mean? Now between aluminium and chlorine, how many bonds should be there? Single बनेगा, double बनेगा. After Jayant, next is Kanak. Just tell me whether chlorine will be forming a single bond or a double bond. Single bond, ma'am. Huh? Single bond. Single bond? Yes, ma'am. Okay. So how many bonds will be formed? You simply have to take 4 chlorine. That And means 4 single bonds will be formed. what hybridization? sp3 without going into detail. sp3. ma'am. Yes, ma'am. अच्छा अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखती हूँ ना स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर नहीं करा रहे कराऊं.
एक होता है आपको Cl माइनस एंड Cl माइनस के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. It is forming a coordinate covalent bond. What we know is that aluminium has only 3 valence electrons. Yes or no? We Yes, have ma'am. done so aluminium has only 3 valence electrons. But what is happening in this case of AlCl4 minus? ये आपको थोड़ा सा slightly higher level है. In the case of aluminium, I am taking the excited state only. In the excited state, what we have got is like this. But what we know is that aluminium is having vacant p orbital. Yes or no? Yes, ma'am. So aluminium will Yes, form ma'am. bonds with chlorine. अब एक Cl minus है वो कैसे bond form करेगा? What we are saying is that aluminium is having 3 valence electrons, so they are forming 3 sigma bonds. Okay. Now what happens with other chlorine? What happens with this chlorine? It is Cl minus, AlCl4 minus. It means there are 3 chlorine and 1 is Cl minus. Now this Cl minus can share its electrons with a vacant p orbital of aluminium. ठीक है, यहाँ पे तो क्लोरीन के साथ सिग्मा 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 normal bond. But with Cl minus, this Cl minus will share its electrons in the vacant p orbitals of aluminium. So total 4 bonds are being formed. There is no lone pair. So hybridization will be sp3. Is the point clear? मैम पर एल्यूमिनियम के पास तो मैम एक एस में है और 2 पी में है, तो sp2 नहीं हुई. sp2 क्यों नहीं हुई? क्योंकि क्लोरीन ने भी तो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए ना, एल्यूमिनियम को दे दिए ना. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का क्या मतलब होता है? When the shared pair of electrons is contributed by only one of the atoms. तीन तो क्लोरीन के साथ नॉर्मल शेयर कर लिए तो sp2 हो गई. ठीक है, लेकिन इसने भी तो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए. तो एल्यूमिनियम के p ऑर्बिटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना. मैम तो लास्ट में p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl माइनस का है. हाँ वो Cl माइनस नहीं, ये वाला अगर मैं इससे दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये Cl माइनस आएंगे. ओके. ठीक है, और एक और इजी वे आउट होता है. आप ये देख लो कि यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बने, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए एंड देयर इज नो लोन पेयर. लोन पेयर तो है नहीं. 4 सिग्मा बॉन्ड्स मींस एक ऐसे बना, बाकी 3 पी से. ठीक है, this is an easier way of finding hybridization without use of any complicated formulas. But you need practice in this topic. If you are preparing for your entrance, this topic is in detail. बहुत ज़्यादा detail में है. Okay, now we are coming to another cases. Now, if I am taking the case of CH4, sorry, C2H6, what is the structure of C2H6? Kunjal, what is the structure of C2H6? Kana, can you answer? या बोलोगे मैम नहीं आता? आज बताओ काना. Yes. Kunjal, are you there? Yes, ma'am. Okay, Kunjal, can you tell me what is the structure of C2H6 that you have done in your class 10? Ma'am, carbon-carbon single bond and with carbon-hydrogen single bond also. Achha, can you just tell me the hybridization of each carbon? Can you tell me what is the hybridization of this carbon without going into any detail? I have told you कि जितने sigma bonds बनते हैं, all these are from hybridization. This carbon is forming how many sigma bonds? First carbon. 4. 4. कुंजल, अब केवल कुंजल आंसर करेगी. ये देखो, ये कार्बन है 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे 1 2 3 and 4. Is there any lone pair? Is there any lone pair? Carbon की configuration क्या होती है? 2 and 4. It is having only 4 valence electrons. ठीक है ना? Carbon is having 4 valence electrons, so it is forming 4 bonds. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now, Kunjal,
what will be the hybridization? First orbital हमेशा s orbital होगा. आगे बोलो, what will be the hybridization of this carbon atom? P3. sp3. अब मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा बच्चों को कॉन्सेप्ट आ रहा है. So this carbon atom is sp3 hybridized. What is the geometry of sp3 hybridization, Kunjal? sp3 means four bonds means tetrahedral. Tetrahedral. Hence, Lakshay, what about the other carbon atom? Lakshay, what Yes, about ma'am. this carbon atom? Ma'am, it will be same as first one. ये भी देखो 1, 2, 3 और ये 4. ठीक है ना, फोर्थ बॉन्ड के दोनों में कॉमन ही है ना. So it is forming 4 sigma bonds means sp3 hybridization, that is tetrahedral. So in C6H4, sorry, in C2H6, each carbon atom, अब यहाँ पे 2 carbon atoms हो गए, each carbon atom is sp3 hybridized. Yes or no? Any doubt in here? No, ma'am. In C2H6, each carbon atom is sp3 hybridized. Now sp3 means tetrahedral. What is the shape of a hybrid orbital, Lakshay? What is the shape of a hybrid orbital? I see, you can explain in your own language. Half dumbbell. Half dumbbell. It is like this one. एक लोग बड़े होते हैं और एक छोटे होते हैं. This is a hybrid orbital, yes or no? Yes. Yes, ma'am. See the first carbon atom. Now this carbon atom is sp3 hybridized. ये C1 ले लिया. This carbon atom is sp3 hybridized. One. अच्छा, इसके लिए आप क्या करना, ये एक कार्बन है, ठीक है, ये sp3 है. sp3 means tetrahedral. 1, 2, 3 and 4. Is it okay? पहले पेंसिल से या डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लो. Now what about the second carbon atom? Yes, Linoy, what about the second carbon atom? Yes, Linoy. Linoy absent. Rohan, what about the second carbon atom? मैम ये जो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे ट्रायंगुलर प्लेनर में बस पीछे वाले में. ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं. Yes or no? Yes. मैंने एक्चुअली में किस तरह से दिखा दिया बॉल शो करने के लिए, लेकिन है दोनों ही आपके टेट्राहेड्रल. ओके, अब ये कार्बन है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड. sp3 मींस दिस इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल. ऐसे होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल. हम सेकंड कार्बन में एक एक्स्ट्रा बन गया. Part 4. Is it okay? फर्स्ट कार्बन हम क्या है? सेकंड कार्बन में एक्स्ट्रा बन गया. मैम एक राइट साइड में एक्स्ट्रा बन गया. पहले इसी की बात करते हैं. Is it okay? अच्छा, Yes. इसमें एक्स्ट्रा. Yes, ma'am. Is okay? Yes, अच्छा, ma'am. यहाँ किसके साथ बॉन्ड्स बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ. हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन? Which orbital is in that? 1s1. 1s1. Shape of s orbital. What हम is the shape of स्फेरिकल नाम होंगे. हम Spherical. hybridization? केवल कार्बन में हुई है. s orbital is spherical. Now this carbon is forming 3 bonds with hydrogen. 1, 2 and 3. Yes or no? Yes. Okay. Now this carbon atom is again sp3 hybridized. So let me draw it with another pen. Okay. Now this carbon atom is again sp3 hybridized. 1, 2, 3. अच्छा, एक bond किसके साथ बने? One bond is between these two carbon atoms. So this is the one bond. Yes or no? Can you see? Yes. Bond is between two carbon Yes. atoms.
और ये किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? हाइड्रोजन के साथ. दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. So this is a hybridization in case of C2H6. It can come for 2 marks or it can be in any of the way. Explanation won't be coming obviously, but MCQs can be found. How many sigma bonds, what is the geometry and anything else. Is the point clear? Yes. Yes, Now ma'am. we are coming to the complicated cases involving pi bonds. अभी तक हमने सारे सिग्मा बॉन्ड्स किए, अभी तक मैंने आपको पाई बॉन्ड नहीं बताया. ठीक है, यहाँ डाउट तो पूछ लेना, 2-3 लोगों के टॉपिक ही नहीं खत्म हो रहा. हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग pi bonds. Now what we are taking are 2 cases. One of them is C2H4. Now first thing to keep in mind is that draw the simpler structure. C2H4 means C double bond C, and now there are 2 hydrogens. This is C2H4, yes or no? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. First point to be kept in mind that sigma bonds are formed by hybrid orbitals, yes or no? Hybridization Yes. of sigma. What about the pi bonds? What about the pi bonds? The hybridization नहीं होती pi bonds. Pi bonds are not formed by hybrid orbitals. Pi bonds are not formed by hybrid orbitals. अच्छा, अगर आपको 1 marker question आ गया, without going into any details, what is the hybridization of this carbon atom? Yes, Rohan or Sanket, Sahil, Rohan, you are telling me, Rohan. Now tell me what is the hybridization of first carbon atom which is marked with a green pen? Rohan. Ma'am, is it sp2? sp2, very good. Why? Because only sigma bonds are formed. So this carbon atom is sp2 hybridized and it is forming only 3 sigma bonds. There are 3 sigma bonds, means sp2. Same is with this carbon atom. This carbon Yes, single, each carbon atom is sp2 hybridized. Yes or no? First point. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Carbon is better for लेनो, वैसे कल तो खत्म करा दूंगी. पहले स्लो चल रहा है. Each carbon atom is sp2 hybridized. Is the concept clear? Now see further. अच्छा, कार्बन की जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, it is 1s2. अब हम डिटेल्स करें. 2s2 2p2. Atomic number 6. It means 2s2 2p2. How many unpaired electrons it is needing? It is forming 3 sigma bonds. What happens? 3 carbon hydrogen bonds come, so it is needing 3 electrons unpaired. So what will happen? One of the electron will go from 2s to 2p. Yes or no? Yes, Yes. ma'am. ठीक है. Hybridization हमारी क्या है? sp2. Hybridization cannot take place without s orbital. तो एक s orbital और बाकी p orbital, they are taking part in hybridization. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Okay, what is the shape of sp2 hybridization? Ma'am, trigonal. Ma'am, it's linear. Trigonal planar. हमारे देखो सारे वेस्पर थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं. sp2 means triangular planar. Okay. Now what about this orbital? ये बच के एक unpaired electron. ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? pi bond. We know that there is a pi bond also. So this unpaired electron will form a pi bond. Okay, and this will be a unhybrid orbital. Yes or no? Pi bond is formed by unhybrid orbital.
The orbital which is forming the pi bond do not take part in hybridization. Is it okay? Yes or no? Yes, Yes. ma'am. ठीक है, यहाँ तक डाउट है पूछ लो क्योंकि फिर आगे करा रही हूँ. ओके, नाउ सी कार्बन के पास आपके 4 एक s ऑर्बिटल्स और 3 p है. फर्स्ट p ऑर्बिटल, सेकंड p ऑर्बिटल एंड थर्ड p ऑर्बिटल. यही से कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स हैं. Now only 1 s and 2 p orbitals are taking part in hybridization. Yes or no? Yes, ma'am. This is what I am telling you. Out of 3 p orbitals, only 2 of the p orbitals are taking part in hybridization. And sp2 means triangular. Triangular means they can arrange themselves in a triangular way. Achha, is this a triangular way also? This is one hybrid orbital, this is another, this is another. Is this triangle? Yes, ma'am. Yes or no? क्योंकि हमारा एक बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में बन रहा है, तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया. So each of the carbon atom is sp2 hybridized. And what about this orbital? ये क्या है आपका? Unhybrid? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देख लो, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लिया है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया, एंड दिस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल विल फॉर्म पाई बॉन्ड. ठीक है, मैम ये pz है ना? pz जनरली ये वाला होता है. दिस ऑर्बिटल आई एम टेकिंग एज pz. आपको मैंने कराया था, इफ यू सी इन द पाई बॉन्ड्स, px and py orbitals can form the pi bonds. Ma'am, but you just now said that the atoms which take place in hybridization don't form any pi bonds. So how this pi bond is formed then? मैंने यही तो बोला कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे p में, एक s में और 3 p में. Yes or no? Yes, ma'am. अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने बने? 3. यानी एक s और 2 p ऑर्बिटल्स कौन से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड्स. Yes, Yes ma'am. or एक लिथियम. Yes or no? Yes, ma'am. जो बच जाता है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता, दैट इज फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड्स. आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स. जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेते, दे आर फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड. ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन. मैंने इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे तो बताइए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड किससे बनेगा? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से. So this unhybrid orbital will be forming a pi bond. Okay, ma'am. Now see, I am drawing the diagram. Diagram can come for 1 marker. Now there are 2 carbon atoms. Now this is my first carbon atom. What is the hybridization of carbon? What is the hybridization of carbon? बोलो, 3 sigma bonds. अभी तो बताया. sp2. sp2. ये कार्बन एटम में sp2 है. sp2 means triangular planar. So Yes. एक ये hybrid orbital. This is one hybrid orbital. This is another hybrid orbital, and this is the third hybrid orbital. Okay, 1 2 3. Yes or no? ये दिखाया था, एक s and 2 p orbitals are taking part in the hybridization, and what we are getting is sp2 hybridization. Any doubt till here? No, Ma'am, what happens to the sigma bond in the middle? सिग्मा तो बता रही हूँ ना, ये आगे समझ. ये मैंने एक कार्बन ले, दिस इज माय फर्स्ट कार्बन एटम. इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच भी गया है. ये भी बताया आपको, ये ऑर्बिटल अनहाइब्रिड बच गया है. यस और नो? ये बताया था. दोबारा देखो, ये डायग्राम देखो, 1 2 3.
तीन orbitals, 1s and 2p orbitals have taken part in the hybridization, so what we are getting is sp2. लेकिन ये वाला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपका बच गया है, दिस ऑर्बिटल इज लेफ्ट. तीन ऑर्बिटल्स तो हाइब्रिड बन गए और एक ऑर्बिटल आपका अनहाइब्रिड बच गया है. पी ऑर्बिटल ऐसे होता है आपका. इज द पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है? मोस्टली स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लास तो पढ़कर ही नहीं आए. नाउ सी द सेकंड कार्बन एटम. अब ये कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ओके, लेट मी यूज अ ब्लू पेन. This carbon atom is again sp2 hybridized. sp2 means triangular planar. तो one एक लो हो गई, दिस इज सेकंड लो. अच्छा, एक सिग्मा बॉन्ड दोनों ने आपस में बनाया है. yes or no? there is a sigma bond Yes. between this carbon atom. अच्छा, इन्होंने इसके साथ क्या बनाया? हाइड्रोजन के साथ. इसके साथ दो हाइड्रोजन है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पर भी आपके दो हाइड्रोजन हैं और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन. यू कैन सी 1 2 दोनों कार्बन है, दो हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड्स. हियर आल्सो 2 सिग्मा बॉन्ड्स, one is here. Now is this carbon atom also having an unhybrid orbital? Yes. दोनों कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है. Yes or no? Yes, ma'am. कार्बन के आउटर ये देखो एक्साइटेड स्टेट में 1s और 3p में इलेक्ट्रॉन्स है. तो एक s और दो p ने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले लें. व्हाट वी आर गेटिंग इज sp2. एक ऑर्बिटल मेरा बच गया था जो अनहाइब्रिड है. हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैंने इस तरह से दिखाया है, अनहाइब्रिड को मैंने पूरा एज इट इज दिखाया क्योंकि उसकी शेप चेंज नहीं हुई. अब ये दोनों जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे? pi bond. Ma'am, pi bond. ऊपर ऊपर वाले से कंबाइन होगा, नीचे वाला नीचे से कंबाइन होगा. सो दिस इज ओनली वन पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड में ऊपर और नीचे दोनों को कंबाइन करते हैं. आई हैव टोल्ड इट पाई बॉन्ड कैसे बनता है. इफ आई एम टेकिंग दिस इज वन p ऑर्बिटल एंड दिस इज अनदर p ऑर्बिटल. इन द फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड ऊपर वाला ऊपर के साथ कंबाइन होता है, नीचे वाला नीचे के साथ. तो इस कॉम्बिनेशन को आई एम कॉलिंग इट इज सिंगल पाई बॉन्ड. दो मत बोल देना. ये एक पाई बॉन्ड बनते हैं जिसमें ऊपर ऊपर से और नीचे नीचे से. So this is called as one pi bond only. मैम Is आपने it वो नीचे दो क्यों बनाए हैं? ये बेटा इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है. ऊपर भी मैंने दो ही बनाए थे, पास पास दिखा दो. ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है. This is a representation only. लेकिन ये एक पाई बॉन्ड बने, ये मैं सोच रही हूँ कि one pi and two pi. No, this is only one pi bond form. एक p ऑर्बिटल एक ही पाई बॉन्ड बनाएगा. और अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो नेक्स्ट एग्जांपल वोंट बी क्लियर टू यू. दिस आई कैन गारंटी. नेक्स्ट में हम 2 पाई बॉन्ड्स वाला करेंगे. वन स्टूडेंट आई थिंक हैज जॉइंड लेट. आई हैव नॉट मार्क्ड द अटेंडेंस ऑफ वन ऑफ यू. या तो खुद बता दो, अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट. यस ऋषभ. Both the Rishabs, have you joined late? मैम Late join किया? मैम मैंने मैम 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था. 5 मिनट बाद नहीं, 10 मिनट बाद ज्वाइन किया. क्योंकि 23 तक तो मैं अटेंडेंस ही ले रही थी. ठीक है, so please Sorry. keep it in mind that you have to join on time. Okay, ma'am. Okay, you can leave, all of you. So I will be taking class tomorrow also. Ma'am, Rishabh Singh present. Yes. Ma'am, Rishabh Singh. मैं उसकी कर दी मैंने माँ. Any doubt you can ask, otherwise you can leave. Any problem in the question papers, you can either call me right now, 10 minutes के अंदर अंदर. Otherwise after 1 o'clock because I will be having my next class. Okay, just go through your papers. Ma'am, have you deducted marks if we are not showing calculations?